In the bustling city of Mumbai, where the streets are alive with the sounds of honking rickshaws, chattering vendors, and the hurried footsteps of thousands, every morning brings a familiar sight. Among the sea of people, children in crisp uniforms weave through the crowds, their school bags bouncing on their backs like trusted companions. For many, these bags are simply a necessity, but for some, they are much more. 10-year-old Rohan was one such child. He shared a special bond with his school bag, a connection that went beyond zippers and straps. To Rohan, his bag was a silent friend, always by his side, carrying not just books and pencils, but also his hopes, his secrets, and his little treasures. To him, it was more than just a bag, it was a loyal companion on his journey of learning. Each day, as he slung it over his shoulders, he felt a sense of excitement, as if he was setting off on a new adventure. The bag had been with him through rainy monsoon mornings, scorching summer afternoons, and even the occasional stumble on the playground. Each morning, Rohan eagerly packed his blue, sticker-covered bag, carefully arranging his notebooks, lunchbox, and favorite pencil case. The stickers, cartoon characters, superheroes, and glittery stars were badges of pride, each one telling a story of a birthday, a festival, or a reward for a job well done. Packing his bag was a ritual, a moment of quiet anticipation before the day began, and he did it with a sense of purpose and joy, ready for another day of discovery. His mother often joked about how he treated the bag like a friend, sometimes even catching him whispering to it or apologizing if it slipped from his shoulder. She would laugh and shake her head, but deep down, she understood. The bag was a part of Rohan's world, a silent witness to his daily triumphs and struggles. At home, he would sometimes sit with it, recounting the day's events as if the bag could listen and understand. In class, the bag sat beside him, guarding his secrets and dreams. It was always within arm's reach, a comforting presence during difficult lessons or moments of doubt. Sometimes, when he felt nervous before a test, he would squeeze the strap for luck, believing that his bag would somehow help him remember everything he had learned. The bag grew heavier with each passing day, as new books and assignments were added, yet Rohan never complained. He shrugged off the weight, trusting in its reliability and strength. To him, the heaviness was a sign of progress, a reminder that he was learning, growing, and moving forward. Little did he know, this growing weight was the start of a mystery. One day, as he zipped up his bag, he noticed it felt different, almost as if it was hiding something from him. The familiar comfort was tinged with curiosity and a hint of worry, as he wondered what could be making it so much heavier than before. The bond between Rohan and his bag was about to be tested in ways he never imagined. What secrets did the bag hold? And would their friendship survive the challenges ahead? As the days unfolded, Rohan would soon discover that sometimes, even the most trusted companions can surprise us, and that the journey of growing up is filled with unexpected twists and turns. Rohan soon noticed his school bag was getting heavier every day. At first he blamed extra books and assignments, but the weight became impossible to ignore. His friends teased him, calling it a magic bag filled with bricks. Even his mother noticed the strain on his face each morning. Rohan insisted everything was normal, not wanting to worry her. Things changed when his teacher, Mrs. Kapoor, saw him struggling and raised concerns during a parent-teacher meeting. This planted the first seed of doubt in Rohan's mind. What could be causing the mysterious weight? Despite his curiosity, Rohan hesitated to investigate, clinging to his trust in the bag. But as the burden grew, he could no longer ignore the mystery. It was time to find out what was really happening. The strange case of Rohan's school bag soon caught the attention of Inspector Arjun, a sharp and observant officer known for his keen instincts and unwavering dedication to solving even the most puzzling mysteries. Arjun had built a reputation in the city for his ability to notice the smallest details that others often overlooked, and he was always ready to help those in need, especially children. When he first heard about a child's bag growing inexplicably heavy, he was both intrigued and concerned. The story, relayed by a worried parent and a few anxious teachers, seemed almost unbelievable. Yet, Arjun knew that sometimes the most unusual cases hid the most important truths. He decided to investigate personally, determined to get to the bottom of this peculiar situation.
Arjun visited Rohan's school the very next morning. He spent time speaking with teachers who described Rohan as a polite and attentive student. He also chatted with several students in the corridors, gently asking questions about Rohan's daily routine, his friends, and whether anyone had noticed anything unusual about him or his belongings. Through these conversations, Arjun found Rohan to be bright, curious, and well-behaved, with no history of trouble or mischief. Teachers praised his helpful nature and willingness to participate in class. There was nothing in his record to suggest he would be involved in anything out of the ordinary. Yet, the mystery of the heavy school bag persisted. Arjun's curiosity only grew stronger. He reviewed the school's security footage, checked the lost and found, and even spoke with the janitorial staff, but nothing seemed out of place. Still, he was determined to solve the case, no matter how long it took. Over the next few days, Arjun observed Rohan closely. He noticed the boy's subtle struggle as he lifted his bag, the way his shoulders slumped under its weight, and the quiet determination in his eyes. There were also small changes in Rohan's demeanor. He seemed more tired than usual, and sometimes hesitated before picking up his bag. Arjun sensed that this was no ordinary case of a child carrying too many books or forgetting to empty his bag. Something else was at play. Something that didn't fit the usual explanations. The puzzle pieces just weren't adding up. His investigation soon led him to Rohan's home, where he met with the boy's concerned parents. They welcomed Arjun into their living room, anxious to help in any way they could. The family discussed Rohan's recent behavior, his schoolwork, and any changes they had noticed at home. With their permission, Arjun carefully examined the contents of Rohan's school bag. He laid out each item on the table, methodically checking every book, notebook, and pencil case. The parents watched nervously, hoping for answers. Arjun hoped to find a clue, something, no matter how small, that would unravel the mystery and explain the bag's unusual weight. He paid close attention to every detail, searching for anything out of the ordinary. What he found inside the bag would change everything, opening up a new chapter in the investigation and leaving everyone in the room stunned. Inside Rohan's bag, Inspector Arjun found unusual items, small packages wrapped in brown paper, each labeled with strange codes. These were not things a 10-year-old should be carrying. Arjun's instincts told him these packages were the key to the mystery. He decided to follow Rohan discreetly, watching his daily routine. Soon, Arjun noticed Rohan stopping at a specific spot to meet an unknown man. The man would hand Rohan something, which he'd place in his bag. Arjun realized Rohan was being used as an unwitting courier. The urgency to protect Rohan and uncover the truth grew stronger. जैसे जैसे इंस्पेक्टर अर्जुन ने जांच आगे बढ़ाई, उनके सामने एक ऐसी सच्चाई खुलती गई, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर दस्तावेज, हर सुराग और हर गवाह की गवाही एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही थी। अर्जुन की आंखों में अब सिर्फ एक ही मकसद था, इस रहस्य को पूरी तरह उजागर करना। उन्हें पता चला कि ये कोडेड पैकेट्स एक अवैध ऑपरेशन का हिस्सा थे, गैर कानूनी सामान की तस्करी। ये पैकेट्स शहर के अलग अलग हिस्सों में भेजे जाते थे और हर पैकेट के पीछे एक मासूम सा चेहरा छुपा होता था, जिसे असलियत का अंदाजा तक नहीं था। वो आदमी जिससे रोहन रोज मिलता था, दरअसल एक शातिर अपराधी था, जो बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसा रहा था। रोहन को लगता था कि वह बस एक दोस्त की मदद कर रहा है, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा खतरनाक थी। ये आदमी एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था, जो शहर के कई इलाकों में फैला हुआ था। इस नेटवर्क के सदस्य इतने चालाक थे कि पुलिस को भी कई महीनों तक उनकी भनक नहीं लगी। वे बच्चों को अपने काम के लिए चुनते थे, ताकि किसी को शक न हो। ये नेटवर्क मासूम बच्चों को तस्करी के लिए इस्तेमाल करता था। रोहन अपनी मासूमियत में बस एक दोस्त की मदद कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके हाथों में जो पैकेट है, उसमें क्या छुपा है। रोहन को लगता था कि वह अपने दोस्त के लिए कुछ अच्छा कर रहा है। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मासूमियत का फायदा उठाया जा रहा है। उसके लिए यह सब एक खेल जैसा था, लेकिन असलियत में वह एक बड़े अपराध का हिस्सा बन चुका था। उसे असली सच्चाई का अंदाजा नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ दोस्ती और भरोसा था, लेकिन उसके आसपास जो हो रहा था वो उसकी समझ से बाहर था। इस ऑपरेशन को खत्म करने के लिए अर्जुन ने अपनी पूरी टीम के साथ एक सटीक योजना बनाई। हर कदम सोच समझ कर रखा गया, ताकि बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचे और अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ा जा सके।
अर्जुन ने पुलिस के साथ मिलकर अपराधियों को पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने शहर के अलग अलग हिस्सों में पुलिस तैनात की ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत पकड़ी जा सके। योजना थी कि रोहन के रोज वाले रास्ते पर उसका पीछा किया जाएगा ताकि जैसे ही वह संदिग्ध व्यक्ति से मिले पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सके। हर पुलिस वाले को उसकी जिम्मेदारी समझा दी गई थी। पुलिस वाले जरूरी जगहों पर तैनात रहेंगे, स्कूल के आसपास, गलियों में और उस जगह पर जहां रोहन आमतौर पर मिलता था, हर जगह पुलिस की नजर थी। ऑपरेशन के दिन अर्जुन की चिंता और सतर्कता चरम पर थी। हर पल की खबर ली जा रही थी। अर्जुन के लिए सबसे जरूरी था कि रोहन को कोई नुकसान न पहुंचे। रोहन की सुरक्षा सबसे जरूरी थी। अर्जुन की नजरें हर वक्त रोहन पर थीं और उनकी टीम हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही रोहन तय जगह की तरफ बढ़ा, पुलिस की धड़कनें तेज हो गईं। हर कोई तैयार था कि किसी भी वक्त कार्रवाई करनी पड़ सकती है। पुलिस ने घेराबंदी कर दी। अब सबकी नजरें उस एक पल पर थीं जब सच सामने आना था और अपराधियों को उनके किए की सजा मिलनी थी। रोहन को अब भी लगता था कि वह एक दोस्त की मदद कर रहा है। उस आदमी ने खुद को एक देखभाल करने वाले वयस्क के रूप में पेश किया और बीमार बच्चों की मदद की कहानी सुनाई थी। रोहन को गर्व और जिम्मेदारी का एहसास होता था। उसे लगता था कि वह किसी नेक काम में योगदान दे रहा है। इसी विश्वास ने उसे आदमी की हर बात मानने के लिए प्रेरित किया। भले ही बैग का वजन बढ़ता गया, इंस्पेक्टर अर्जुन का दिल रोहन के लिए दुखी हो गया। उसकी मासूमियत का गलत इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस ने जैसे ही उस आदमी को पकड़ा, अर्जुन रोहन के पास गया, सच बताने के लिए तैयार। यह बातचीत रोहन की दुनिया बदलने वाली थी। जब इंस्पेक्टर अर्जुन ने रोहन को सच्चाई बताई तो उसकी आंखों में हैरानी और अविश्वास था। जिसे वह दोस्त समझता था, वह असल में अपराधी निकला। जो पैकेज वह उठा रहा था, वे गैर कानूनी काम का हिस्सा थे। सच सामने आते ही रोहन का दिल टूट गया। अब बैग का वजन धोखे के बोझ के आगे कुछ भी नहीं था। अर्जुन ने समझाया कि गलती रोहन की नहीं थी, उसकी अच्छाई का फायदा उठाया गया। माता पिता ने रोहन को गले लगाया, शुक्रगुजार थे कि वह सुरक्षित है। अब वे सब मिलकर रोहन का साथ देने का वादा करते हैं ताकि वह इस अनुभव से सीख सके। इस घटना के बाद रोहन और उसके परिवार ने सीखा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए खुलकर बातचीत और सतर्कता जरूरी है। माता पिता ने अब रोज उसके साथ समय बिताना शुरू किया और उसे कोई भी चिंता बताने के लिए प्रोत्साहित किया। रोहन ने भी सीखा कि बिना समझे और सवाल किए कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। इंस्पेक्टर अर्जुन ने स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और जागरूकता पर बात की। उन्होंने बताया कि शिक्षकों और माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को संभावित खतरों को पहचानना सिखाएं। स्कूल समुदाय ने सुरक्षित माहौल बनाने का वादा किया। यह घटना सभी के लिए चेतावनी बन गई कि बच्चों को शोषण से बचाने के लिए सतर्कता जरूरी है। रोहन और उसके स्कूल बैग की कहानी सतर्कता और जागरूकता की अहमियत दिखाती है। यह बताती है कि मासूमियत का फायदा कितनी आसानी से उठाया जा सकता है। अगर हम संवाद करें और सोच समझकर फैसले लें तो खुद को और अपनों को सुरक्षित रख सकते हैं। रोहन के लिए यह अनुभव उसकी मासूमियत को जागरूकता में बदल गया। अब वह जानता है कि किसी भी बात पर कदम उठाने से पहले सवाल करना जरूरी है। माता पिता और शिक्षकों के लिए भी यह कहानी बच्चों का मार्गदर्शन, प्यार और देखभाल से करने की अहमियत को रेखांकित करती है। आखिरकार जागरूक और सतर्क रहना ही सबसे अच्छा बचाव है।